Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we are going to start our new chapter of class 8, Reaching the Age of Adolescence. In the previous video, we have done two chapters of biology, cell and reproduction. That two chapters are closely related to this chapter also, that is Reaching the Age of Adolescence. So let's start this chapter. In this chapter, we are going to discuss some important and interesting topics like the endocrine system, functions of different kind of hormones, menstrual cycle, sex determination and health issue of adults. But before going to discuss that topics, we have some basic definition and basic fundamentals of this chapter. With the help of definition, we can understand these basic fundamentals, that is puberty and adolescence. We are very much aware of this definition puberty because we have done this definition in the previous chapter reproduction. What is puberty? Let us revise it again. What is puberty? This is the stage when a child, or you can say this is the stage when a body become capable to produce new young ones or new offspring or new individual. ये तीनों वर्ड एक ही हैं. These three words are related to a single word, that is new generation. New young ones, new offspring and new individual. इन तीनों का मतलब है next generation से. ठीक है? A body become capable to produce next generation. That stage is called puberty. Or you can say when the sexual parts, or you can say reproductive parts of boys and girls are well mature to work properly. That stage is also called puberty. When it comes at the age of 11. It can become at the age of 12, 13, 14, 15, or it can become at the age of 16 in boys, and in girls 1 year before. It can be, puberty can become at 10, 11, 12, or it can become at 15 in girls. Okay. Now, what is adolescence? It is the time period. Adolescence is the time period between the conversion of child to an adult. Child का adult में जो conversion है और उसके बीच में जो time लग रहा है, that time period is called adolescence. But what is child and what do you mean by adult? What is child? The time period just before the puberty is called child age. Puberty comes at the age of 11, or it can become at the age of 10 in girls. But before that, 1 to 9, at the age of 1 to 9, this time period is called child age. और ऐसे हम humans को हम क्या बोलेंगे? Children. And what is adolescence? The conversion of child into an adult is adolescence. So we have to understand what is adult, and we should understand what is puberty and adolescence, how these two terms are related to each other. Okay. When a child reaches puberty, he become or she become an adolescent. ठीक है ना. जब भी कोई चिल्ड्रन प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचता है, रीच करता है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं. ठीक है ना. लेकिन उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस स्टेज तो प्यूबर्टी है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोलेंगे एडोलेसेंट. ही बिकम और शी बिकम एन एडोलेसेंट. एंड दिस कंटिन्यू, अभी चलती रहती है. ठीक है ना. कब तक? इट कंटिन्यूज अंटिल द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स. जब 18 और 19 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ही बिकम एन अडल्ट. तो इस एज को हम क्या बोलेंगे? अडल्ट. 18 और 19 ईयर्स. इसलिए मैरिज के लिए भी जो एक एज डिफाइन की गई है बाय द गवर्नमेंट, वो यही है 18, कि जो मैरिज होगी वो आफ्टर 18 होगी, क्योंकि वो एक कंप्लीट अडल्ट हो जाते हैं, वेदर शी इज अ गर्ल और वेदर ही इज अ बॉय. ठीक है ना. तो वो अडल्ट एज चल जाते हैं. तो सबसे लास्ट स्टेज अडल्ट है और सबसे पहली स्टेज चाइल्ड है. बीच में प्यूबर्टी भी आती है. प्यूबर्टी जब पहुंचती है तो वो चिल्ड्रन एडोलेसेंट बन जाता है. और ये जो एडोलेसेंस है, ये कंटिन्यू है. इट
the adolescence continues until the age of 18 or 19, or that stage is called adult. So the conversion of child into an adult is called adolescence. Puberty इनके बीच में आती है. So this is the main important points of puberty and adolescence. After this we are going to discuss the glands and the types of glands. What do you mean by glands? Glands क्या होती हैं? What is glands? और उनके types. ये हमारा main अगला next topic है. So let's start. Yes, my dear students. Next is gland. What is gland? Glands is a structure that is made up of a number of cells, or you can say tissue, that does not have a specialized shape, but the function of gland is to produce hormones and enzymes. The main function of glands is to produce hormones and enzymes. It can be ductless or it can be with duct. What is duct? Duct is a tube-like structure. Duct is a tube-like structure. So gland can be ductless. Gland can be ductless and it can be with ducts. The glands without ducts are called endocrine glands, and the glands with ducts are called exocrine glands. The glands which has ducts, the main function of that type of gland is to produce enzymes. They produce enzymes. And the ductless gland, जिसको हम endocrine glands बोलते हैं, the main function of endocrine gland is to produce hormones. Okay. Now, can we give an example of some endocrine and exocrine? Yes, we can. We can give the example. The example of exocrine glands. Number one, salivary glands. Very common. Salivary glands. And number two, pancreas. Pancreas. We can also give example of endocrine glands. We have a lot of examples of endocrine glands, like pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovary, and testes. These are the common examples of endocrine, or you can say ductless glands. So main function, or we should understand the endocrine system in this chapter, because this is the main part of our syllabus of this chapter. Endocrine glands ये हमें नहीं करना, exocrine glands नहीं करनी है, ठीक है ना. The main work is to understand the endocrine glands. The shape of endocrine glands like this. It can be a mass, simple mass of, or you can say group of cell. There is no duct on the surface of endocrine glands because this is ductless glands. But on the exocrine glands, you can see some ducts. This is duct. So the function of pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, ovary, testes is to produce hormones. क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी है, पिट्यूटरी प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, थायराइड प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, सबके हार्मोन्स अलग हैं और उनका फंक्शंस भी अलग हैं सबके, ठीक है. नाउ द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस एंजाइम्स. ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स? द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इज टू डाइजेस्ट द फूड. हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में, ठीक है ना. What is the function of hormones? Hormones has many functions like growth, speaking, like our lot of functions like insulin produce होता है इसके अंदर, जो हमारी conversion of glucose into glycogen वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे. हमारी फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल मेंटल अवेयरनेस, हमारे इंटेलिजेंस, हमारा रिस्पॉन्स, ये सभी के सभी जो डिसाइड होते हैं वो हमारे हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है ना. अब जब इसके पास कोई डक्ट नहीं है तो ये कैसे ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्योंकि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंडोक्राइन में, बट जो इनके टारगेट होता है वो टारगेट होता है फार अवे, दूर होता है.
फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जाम्पल लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? हमारे हेड में प्रेजेंट है, ब्रेन के पास। और मेन फंक्शन इसका क्या है? इसका मेन फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन प्रोड्यूस करना, ग्रोथ हार्मोन, जो पूरी बॉडी ग्रोथ करता है। पूरी बॉडी तो इससे काफी दूर है, तो यहां से यहां तक ये हार्मोन पहुंचता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। हॉर्मोन्स ट्रेवल इन, मत भूलना बेटा, ये हॉर्मोन्स ट्रेवल इन ब्लड। ब्लड कैरी क्या करता है? हॉर्मोन्स कैरी करता है, एंड इट ट्रांसफर हार्मोन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। हाउ एंजाइम्स ट्रेवल इन द बॉडी? विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। यानी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? वो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, एंड दे जनरली प्रेजेंट इन द नियर बाई कंडीशन ऑफ द टारगेट साइट। यानी जो टारगेट्स है वो इसके आसपास ही होता है, क्योंकि डक्ट इतने ऐसे नहीं है कि आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यहां पर प्रेजेंट है और टारगेट यहां पर है, तो इतनी बड़ी डक्ट नहीं होती है, बिल्कुल पास ही होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स? टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, टू प्रोड्यूस सलाइवा। और सलाइवा की नीड कहां पर होती है? माउथ में ही होती है। तो और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो कहां प्रेजेंट होती है? वो भी माउथ में प्रेजेंट होती है। तो टारगेट साइट भी पास में है और लोकेशन भी पास में है, तो ज्यादा बड़ी डक्ट्स नहीं होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। और यहां पर ऐसी भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, यहां पर तो एडवांटेज है कि जो आपका हार्मोन्स है उसको ब्लड कैरी करता है, और ब्लड तो पूरी बॉडी में होता है, तो कितना भी दूर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन फंक्शन जो हमारी ड्यूटी है, आवर ड्यूटी इज टू अंडरस्टैंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड द नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहां पर जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी जो फंक्शंस है उनको कंप्लीट हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके लोकेशंस कहां पर हैं और इनके फंक्शंस करने वाले हैं।